नवसारी महानगर पालिका की दूसरी सामान्य सभा आज टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक के दौरान महानगर पालिका की विभिन्न स्थायी एवं अन्य समितियों का गठन किया गया। इसी दौरान कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों ने समितियों में स्थान नहीं मिलने पर भाजपा पर लोकतंत्र की अवहेलना करना आरोप लगाया है। नवसारी महानगर पालिका की दूसरी सामान्य सभा मेयर अशोक धोरजिया की अध्यक्षता में टाउन हॉल में आयोजित हुई थी। बैठक में महानगर पालिका की विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इन समितियों में कांग्रेस के केवल 2 निर्वाचित पार्षदों को भी स्थान नहीं दिए जाने पर कांग्रेस सदस्यों ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूरा प्रशासनिक तंत्र केवल भाजपा तक ही सीमित होकर रह गया है। उनका कहना था कि विपक्ष के 2 निर्वाचित कांग्रेस पार्षदों को किसी भी समिति में शामिल नहीं किया गया, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और उनके साथ घोर अन्याय के सामने आए हैं। લોકશાહી જેવું કંઈક છે કે નથી? અમે પણ ચૂંટાઈને અહીંયા આવ્યા પછી કોંગ્રેસ ભાજપ કંઈ નહીં હોવું જોઈએ। અહીંયા લોક પ્રતિનિધિ છે, બસ એટલું જ હોવું જોઈએ। તે માટે આપશ્રીને મારે કહેવું છે, તમે આ અન્યાય કેમ કર્યો? તમે પૂછવું છે મારે આપશ્રીને। આ વિરોધ પક્ષ નહીં, આપણો સંખ્યામાં નથી અમારી પાસે, પણ કમિટીઓમાં રચનામાં અમારો સભાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે। સભાનું કોઈ અહીંયા કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે। સભાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું એવું નહીં સાહેબ, અમારે ક્યારે બોલવાનું? તમે તો આવું થોડું ચાલે। તો લોકશાહી જેવું કંઈ રહ્યું જ નથી, એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કશો વાંધો નહીં। લોકોના કામ કરવા માટે છે અમે, તે જઈને ઉભા જ રહેલા છે ને વડોડે ફરતા જ છે, પણ અહીં અમને અન્યાય થયો છે તે દેખીતી રીતે ખબર પડતી છે। લોકશાહીનું ચીહરણ છે। ચલો પૈડા